Hi, this is Deshmukh Gajanan. I welcome you all to my YouTube channel. The name of my YouTube channel is Journey of English. I appeal all of you to subscribe my YouTube channel for the complete preparation of English language and literature. In today's session or video, we are going to study an important topic of English grammar. The title of the topic is use of not only but also. Try to understand not only but also is a conjunction. We will study the use of not only but also with various examples. Let us begin to study this topic. She is beautiful. She is intelligent. The instruction is like this. Rewrite the sentence using not only dash dash but also. You may come across this kind of sentence in your examination. These kinds of sentences may appear in competitive exams. Try to understand the usage of not only but also conjunction. So here what is needed, what changes do we have to perform in this sentence? First of all, see here, this is a verb. In the first sentence is a verb, in the second sentence also is a verb. दोनों भी सेंटेंस में क्या है, जो सेम पार्ट है, शी इज जो है, दोनों भी सेंटेंस में क्या है, सिमिलर पार्ट है या सेम पार्ट है. तो हमें क्या करने का है, वी हैव टू कॉपी इट और राइट एज इट इज. शी इज beautiful is an adjective in the first sentence. In the second statement, intelligent is an adjective. So we have to use not only before the first adjective and but also before the second adjective. She is not only beautiful but also intelligent. This is so simple, my dear friends. Try to understand it in a proper way. Now we will study another example. He looted the shop. He set fire to it. He set fire to it. He looted the shop. He set fire to it. यहाँ पे ध्यान दीजिए, दोनों भी सेंटेंसेस में ही जो वर्ड है वो कॉमन है, पर जो वर्ब्स है, वर्ब्स आर डिफरेंट इन बोथ द सेंटेंसेस. इन द फर्स्ट स्टेटमेंट लूटेड इज अ वर्ब, इन द सेकंड स्टेटमेंट सेट इज अ वर्ब. तो यहाँ पे हमें क्या करने का है, जो कॉमन वर्ड है दोनों भी सेंटेंसेस में ही है, वो एज इट इज लिखने का है. आफ्टर दैट वी हैव टू यूज नॉट ओनली. He not only looted the shop. After that we have to use but also set fire to it. Very simple. Now we will study a few other examples. Please have a look at the board. Shakespeare was a poet. He was, we can write Shakespeare was a dramatist. Join these sentences using not only but also. The instruction may be like this. Rewrite the sentences using not only but also. So here यहाँ पे ध्यान दीजिए, शेक्सपियर फर्स्ट सेंटेंस में और सेकंड सेंटेंस में भी क्या है, कॉमन है, और जो वर्ब है वॉज फर्स्ट सेकंड सेंटेंस में भी है और सेकंड सेंटेंस में भी वॉज ही वर्ब है. सो वी हैव टू राइट दोज कॉमन पार्ट्स एट द बिगिनिंग ऑफ आवर आंसर.
शेक्सपियर वॉज, तो ये जो कॉमन है दोनों भी सेंटेंसेस में वो हमें पहले लिखने का है। उसके बाद नॉट ओनली अ पोएट, नॉट ओनली अ पोएट बट ऑल्सो अ ड्रामेटिस्ट, very simple. Okay, this is so simple. Now we will study another example. Rohan is clever, Rohan is humble. Humble means polite. Rewrite the sentence using not only but also. रोहन इज नॉट ओनली, ये दोनों भी कॉमन है तो एज इट इज हमें लिखने का है। रोहन इज नॉट ओनली क्लेवर बट ऑल्सो हम्बल। रोहन इज नॉट ओनली क्लेवर बट ऑल्सो हम्बल। नाउ अनदर एग्जाम्पल, राजू स्पीक्स इंग्लिश fluently. Raju speaks English fluently. Raju speaks English naturally. Join the sentences using not only but also. This is the instruction. So here also what formula or what rule should we follow? First of all we have to write the common part as it is. राजू जो है, मतलब राजू जो वर्ड है वी हैव टू यूज एज इट इज राजू। उसके बाद स्पीक्स भी वर्ब क्या है, दोनों भी सेंटेंसेस में कॉमन है। राजू स्पीक्स इंग्लिश not only fluently but also naturally. In this way we have studied the use of not only but also conjunction with the help of this video. I hope that you must have understood the whole content in a proper way. Once again I request all of you to subscribe my YouTube channel for the complete preparation of English grammar. Thanks for watching the video. Please subscribe my channel. Have a good day everyone.